से स्टार्ट करते हैं। राइट दी resonating structure for following. All of you know the structure of CHO, no? Complete structure of CHO. Yes, guys, tell me. Yes, sir. है ना, सी डबल बॉन्ड वो होता है या फिर हाइड्रोजन होता है इस तरह से। Also, I've started the focus mode on. You can turn your cameras on. Once you're done, you will send it
on my WhatsApp. Okay. I don't have my phone with me right now, so can I show you Sure. on the screen? Yeah, sure. Mm, yes, correct. I think that is correct. And very good, very good. Correct, Asha. Yeah. Noha, what happened? Your camera is not on today. लास्ट स्ट्रक्चर में देखिए, द लास्ट स्ट्रक्चर नोहा, कुछ गलती दिख रही है आपको? यस नोहा, टेल मी। Yes, sir. है ना? क्या गलती बताइए? C double bond. हाँ, बेंजीन रिंग के साथ जो डबल बॉन्ड आ गया है ना? ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। आ गया, सही है, वेरी गुड। रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लीजिए फिर। या वेरी गुड मरियम, करेक्ट। Okay, all of you are done. So first of all, this bond will move here, and this pi bond will move towards the oxygen atom. Oxygen atom will get a negative charge. These two bonds are as it is, and this ortho position will get a positive charge because electron is moving away from there. Then this A double bond B single bond C pe positive, so this bond will move here like this. Acha, also there will be a double bond here, na? Now this negative charge, this double bond, and this double bond will be as it is. There will be a double bond on these two carbon atoms and a positive charge here. Now this bond will move like this, and this negative charge, this double bond, and this double bond are as it is. There will be a double bond here and a positive charge here. Then the carbon benzene ring double bond will move like this. Oxygen will move its negative charge there. So there will be a double bond here. This two double bond will be as it is, and there will be a new double bond here. And so these are the resonating structures. If I want to draw the resonance hybrid, then the benzene structure will be as it is. A double bond O, and then this will be like this. There will be a partial double bond character here. Delta positive on the ortho, para, and ortho. Makes sense. So, won't there be a partial double bond between carbon and oxygen? Yeah, correct. Okay. There will be a partial double bond there also.
So there is only one left, no? एक आपका बचा हुआ है, that is the fifth case. Lone pair, sigma, and then positive charge. So it will be like this: A, lone pair, sigma bond with B, and a positive charge. तो दूसरा केस इसका आप बोल सकते हैं, it will be something like this: A, single bond B, and there will be a negative charge and positive charge. ठीक है, अब इसी चीज को ना देखने का एक और नजरिया आपके पास होना चाहिए, that whenever you have A double bond B, there this case can arise, this particular case can arise. Okay, देखिए ध्यान से. For example, if you have something like this is a carbonyl compound. अब देखिए बेसिकली हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक दिस. ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव. वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल ऑफ रेजोनेंस, राइट? तो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? करेक्ट है. तो द रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी ऑक्सीजन, दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव. ठीक है. अदर थिंग्स दैट यू कैन हैव इज, इसका जो आपका यूज आएगा ना, दैट विल बी यूज्ड इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. जैसे मान लीजिए अगर आपके पास CH3, then you have oxygen atom with lone pair electrons like this, and then there is a CH2 positive. अब ये एक ऐसा कार्बोकैटायन है ना which is resonance stabilized. How? This oxygen can give the electron density here, और यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 bonded with oxygen, doubly bonded with CH2, and oxygen के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. Makes sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. है ना? Lone pair and then sigma and then positive. If I want to make the resonance hybrid structure, then it will be something like this: CH3 singly bonded with oxygen, and CH2. There's a partial double bond here, delta positive here, delta positive here. ठीक है? Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Now, the important thing about the different resonating structures that we have seen like this. अच्छा, एक आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं ना. Let us suppose you are having CH3, and then you have nitrogen with lone pair here like this, a hydrogen atom here, and then here you have CH2 positive. It will be very similar to the oxygen one. Please complete this and send the answer for this one.
So there'll always be only two structures. या फर्दर मतलब इसमें आगे कुछ और हो सकता है, देयर कैन बी सम अदर केसेस ऑफ रेजोनेंस अटैच्ड इन दिस, बट इसमें इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो ये करेक्ट मीडियम, वेरी गुड। आई थिंक दीस आर इजी, नॉट वेरी हार्ड। वेटिंग फॉर अदर्स, जल्दी बना दे। वेरी गुड, करेक्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लोन पेयर जैसे अभी हम दिखा रहे हैं ना आप लोग को, एक्सप्लिसिटली शोइंग यू गाइस दैट देयर इज अ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इट विल नॉट बी देयर इन योर पेपर, ऐसा आपको शो करके नहीं दिया रहेगा कि वहां पे लोन पेयर। यू शुड रिमेंबर दिस वन, whenever oxygen makes two bonds there is a lone pair, there are two lone pairs, when nitrogen makes three bond there is one lone pair। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए। गॉट इट? ये सुनो आलिया, नुहा एंड हर्षन। Yes, sir. ओके, व्हाट हैपेंड मरियम, आज आपका कैमरा ऑन नहीं है? Sir, can I switch it on? Switch it on after 5 minutes? Yeah, fine, no problem, it's okay। Yeah, correct, Nuha, very good। So I think everyone has sent। So for finding lone pair, do we count the number of valence electrons? लोन पेयर्स अगर आपको पता करना है ना, हाउ मेनी लोन पेयर्स आती है, देन दिस वुड बी इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस द नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट दे आर हैविंग, ठीक है। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5. 5। हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3 डिवाइड बाय 2। सो 5 minus 3 is equal to 2, 2 by 2 it will be equal to 1। तो एक लोन पेयर, there is one pair of लोन, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है 1। गॉट इट? there is one pair of लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अच्छा, इसको लिखना है तो लिख लीजिए आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स डिवाइड बाय 2। नाउ ठीक है। Sir? If someone is asking something, Yeah. When are we gonna finish the chapter? I think one more class, I would say, एक या दो क्लास और, बिकॉज अच्छा एक बात बताइए, ये सारी चीजें पढ़ी हैं आप लोग ने? क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, these things are taught in your school? हर्षा, आपके स्कूल में हुआ है? Yes. What about others? Mariam? In 11th? In 11th, हाँ, इस चैप्टर में। No, not yet. अच्छा, they are still teaching this chapter? Yeah. Okay, Noha, what about your school? We started hydrocarbon, we completed this chapter. So in this chapter, did they teach you steam distillation, fractional distillation, predicting the amount of phosphorus, sulfur, halogens? So, Yes बोल रहे हैं, no बोल रहे हैं आप? yes. अच्छा, दे ठीक है। मोस्टली मतलब जनरली ज्यादा सवाल आते नहीं है, एंड 12th में वो चीज ना, जो एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक पार्ट फंक्शनल ग्रुप, वो उतना ज्यादा है भी 12th में, बहुत सारे स्कूल्स को स्किप कर देते हैं। सो वी विल टेक लाइक एक क्लास लीडिंग दोनों बैचेस का कंबाइंड उस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है, हाउ टू गेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट वगैरह। बट ये जो मेन पार्ट है आपका ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके लिए विल बी नीडिंग 1 और 2 मोर क्लासेस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा, इफ आई जस्ट कंपेयर द स्ट्रक्चर्स
आपको क्या लगता है, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन? विच वन इज मोर स्टेबल? First. चार्जेस को देख के फर्स्ट वन ना, बिकॉज वहां पे चार्जेस नहीं है. इन द सेकंड वन यहाँ पे चार्जेस भी मौजूद हैं, राइट? ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट इफ यू लुक एट दिस कार्बन एटम हियर, this carbon atom is having 4 bonds, this carbon atom is only having 3 bonds. तो यहाँ पे तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे all the atoms are having their octet complete. So one thing you can for sure say that all resonating structures are not equivalent. सारे resonating structures जो होते हैं ना वो equivalent नहीं होते. There are some resonating structures which are more stable than the other. So the resonating structure which is more stable, it contributes more towards the resonance hybrid. So please write contribution of different resonating structure. क्या contribution होता है एक particular resonating structure का? ठीक है, this is the topic. Contribution of किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है? Contribution of different resonating structures. We'll write here the first point. All resonating structures contributes to resonance hybrid structure, but the contribution of each resonating structure is not same. Is not same. More stable resonating structure contributes more and is more dominant. ठीक है. Now how to decide which particular resonating structure is more stable? उसके लिए कुछ rules हैं. Please write rules for stability of resonating structures. ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा. Number 1, more number of bonds का मतलब होगा more stable. सबसे पहले आप number of bonds देखेंगे कहाँ सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो जैसे ये पहला क्राइटेरिया है. इफ यू आर गेटिंग, अगर आपको ऑर्डर मिल गया अबाउट स्टेबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, तो आगे आप क्राइटेरिया को नहीं देखेंगे. सेकंड आपको देखना है न्यूट्रल एंड चार्ज. ऑलवेज न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन दी चार्ज. लेकिन सबसे पहले न्यूट्रल और चार्ज नहीं देखिएगा आप, पहले देखिएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स. मेक सेंस? इस नो प्लीज टेल मी गाइस, बात समझ में आ रही है? ठीक है. थर्ड थिंग इज, तीसरी चीज आपको देखनी है नेगेटिव चार्ज जो होगा ना इज स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे. मान लीजिए आपके पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक में नेगेटिव चार्ज आ रहा है कार्बन के ऊपर और दूसरे में नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि फर्स्ट टू स्ट्रक्चर्स में आपके दोनों को मतलब सेम चीजें आ रही हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स है और दोनों ही न्यूट्रल है या दोनों ही चार्ज है. उसके बाद फिर हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे. फोर्थ में आपको ध्यान रखना है, if you are having like charges in this structure, then like charges should be as far as possible. Like charges should be as far as possible, and unlike charges should be as close as possible. है ना? अच्छा, this is for greater stability. For
greater stability. ठीक है. Now write a question. All of you wrote this down, no? Let me know if you're still writing. Arrange the following in order of their stability. You have H, carbon double bond O, and here you have OH. ठीक है. So सबसे पहले आपके पास H, कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एंड देन OH. ठीक है. सी देखिए यहाँ पे लोन पेयर होगा, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, तो आपके पास कह सकते हैं H, कार्बन O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन एटम, एंड देन यू आर हैविंग हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. सी हो गया. एंड डी में क्या लिख सकते हैं, डी में H, कार्बन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, एंड देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन. ठीक है. चलिए अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें बता रहे हैं. सुनिए भी कुछ कीजिएगा मत, एक एक करके. व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, सबसे पहले तो बॉन्ड्स काउंट कीजिए, हाउ मेनी बॉन्ड्स यू आर हैविंग. ठीक है. उसके बाद बताइए आइदर इट इज न्यूट्रल है या चार्ज है, और अगर चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज है तो किस पे है, चार्ज ऑन. तो इन द फर्स्ट केस टेल मी हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, कितने बॉन्ड्स में काउंट करके बताइए ना इन द चैट, जूम चैट पे. करेक्ट हर्षा. बाकी लोग बताइए हाउ मेनी बॉन्ड्स इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर. अरे चैट में बता दो, उसके बाद लिखते रहना. हाँ मरियम करेक्ट, वेरी गुड. नहीं समझ में आ रहा आलिया, आलिया नहीं समझ में आ रहा आपको. योर माइक इज ऑफ आलिया. नहीं समझ में आ रहा. अरे बॉन्ड्स तो काउंट कर सकते ना पहले स्ट्रक्चर में. ए में कितने बॉन्ड्स हैं. ओ मतलब सारे. ओके. हाँ बॉन्ड्स काउंट कर लो बस, कितने बॉन्ड्स हैं. नहीं फिर से देखो आलिया, सारे बॉन्ड्स जितने भी बॉन्ड्स हैं. व्हाई आर यू मिसिंग एनीथिंग. There are 5, right? या 5 to 4 लिखा है आपने. Yeah, actually मैंने सिर्फ कार्बन का देखा था. अच्छा अच्छा ठीक है. लोहा 5 ना, आपका आंसर नहीं आया लोहा. 5 या 4. 5. 5 न्यूट्रल या चार्ज, न्यूट्रल. Okay, what about the next structure? How many bonds in the next structure? 4 bonds. Neutral और charge? Charged. चार्ज है ना, चार्ज लिखेंगे. अच्छा चार्ज में ना नेगेटिव चार्ज देखिएगा कहाँ पे है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बताइए. Oxygen. ऑन ऑक्सीजन एटम. ठीक है. उसके बाद सी में हाउ मेनी बॉन्ड्स. टेल मी द सी स्ट्रक्चर हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर.
हाउ मेनी, जोर से बोले। 3 bonds. 3, 5 अरे भाई, 1 2 3 4 and 5 ना, 5 bonds है राइट सुमा। Yes, sir. I misunderstood your question. Okay, and it is also charged, right? And in this case देखिए चार्ज जो है आपके पास ऑक्सीजन पे है एंड पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही ऑक्सीजन पे के ऊपर है, राइट? In this structure we are having 4 bonds, it is also charged, and then in this case we are having negative on carbon. अब according to this structure I will first have to compare the A structure and C structure. A और C में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बिकॉज सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉन्ड्स को हम लोग देखेंगे ना, तो 5 बॉन्ड्स वाले पहले हम लोग देख देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो ए और सी में कौन ज्यादा स्टेबल है? A. ए बिकॉज इट इज, हाँ ए बिकॉज इट इज न्यूट्रल, करेक्ट। ए तो ए के बाद तो सी आ गया है ना, उस पर आपको कुछ नहीं देखना है। देन यू नीड टू कंपेयर बी एंड डी। अब बताइए बी और डी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? B. बी विल बी मोर स्टेबल, व्हाई? Oxygen is more electronegative. हाँ, नेगेटिव चार्ज इट इज ऑन ऑक्सीजन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी विल बी मोर स्टेबल एंड देन बी विल बी देयर। तो अब देखिए जो बहुत सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ डी विल बी द लीस्ट, the highest contribution of one of these resonating structures, ए का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद किसका होगा? सी का, उसके बाद बी का एंड उसके बाद डी का। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। Sir. Yes, sir. Yeah, okay, please copy this down. Sir, Yes, what you? in the third one, O has positive and negative, Mm-hmm. and then there is another O, and then it has positive on it. Yeah. So that positive charge isn't for carbon. Which positive? नहीं, अरे एक सेकंड, ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं आप क्या मरियम? Yes, sir. अरे नहीं,
ये तो कार्बन का, आई थॉट सी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। हाँ नेगेटिव है और पॉजिटिव, आई थॉट दैट ये कार्बन, ये बी स्ट्रक्चर का है वो, ठीक है। मतलब फिर राइटिंग कैसे होगी सर? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। Resonating structures stabilizes the reactive intermediates stabilizes the reactive intermediates by delocalization of charge. By delocalization of charges. हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास you have CH3, CH2 and CH2 positive, ठीक है। इस तरह का आपके पास एक कार्बोकैटायन है, and you have another carbocation which is CH2 doubly bonded with CH, then singly bonded with CH2. Then this carbocation will be more stable because this is more stable, क्योंकि इसके पास क्या है, it has more resonating, इसके पास resonance है। यहाँ पे you will not have any resonance, here only you are having plus I effect। यहाँ पे resonance की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे resonance की वजह से there will be more stabilization। Make sense? Yes or no? Please tell me। ठीक है, Yes, more sir. stable। Okay. Similar is the case for carbon ions also, है ना, जहां पे resonance आ जाएगा। So all of these, इस तरह के केसेस को क्या बोलेंगे, these are stabilized by the resonance effect, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। नाउ देर इज अनदर थिंग विच इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। वो थोड़ा सा बस अलग होता है रेजोनेंस से, प्लीज राइट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ये लिख लिया आप लोगों ने, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द रिएक्टिव इंटरमीडिएट बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस। Yes, sir. यस, ओके। सो मेसोमेरिक इफेक्ट में आप लिखिएगा शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स और अवे from a substituent group is called mesomeric effect. It's called mesomeric effect. अब देखिए जरा यहाँ पे, for example, if you have CH2 double bond CH single bond OH, oxygen has lone pair electrons, so A double bond D single bond C, CP lone pair, so there will be a resonance like this, है ना। आप यहाँ पे दिख रहा है that OH is a functional group, it is a substituent group which is attached on the main chain of carbon hydrocarbons, right। और OH के आने की वजह से, because of the presence of OH, हाइड्रोकार्बन्स की तरफ और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कैन यू सी दैट, है ना, ठीक है। और OH के वजह से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, द मेसोमेरिक इफेक्ट, दे आर कमिंग वाया द मेसोमेरिक इफेक्ट। कैन यू सी दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी। सबको दिख रहा है ना? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, द इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम OH, ठीक है, वाया मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस। हाँ हाँ बताएं। Sir, can you repeat, please? अच्छा, हम ये कह रहे हैं, देखिए ये आपका ग्रुप है, I hope Yes. you can see that this is a group,
एंड दिस इज द Yes. चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का मेन चेन है ना, करेक्ट है? Yes. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टुवर्ड्स दिस चेन ना, Yeah. ठीक है, एंड दे आर कमिंग वाया द मेसोमेरिक इफेक्ट, वाया रेजोनेंस, Yeah. ठीक है? तो इस तरह के केस को बोला जाता है प्लस एम इफेक्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज समटाइम्स और प्लस आर इफेक्ट। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी, ठीक है? और जो OH है ना, OH ग्रुप को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मेक सेंस? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट? इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर आप यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बातों को ले आएंगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल बी पुलिंग वाया इंडक्टिव इफेक्ट, और रेजोनेंस से ये दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को। बट बिकॉज रेजोनेंस में देयर इज अ कंप्लीट शिफ्टिंग, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इट इज अ कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। वो बात की बात है, लेकिन आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। यस और नो प्लीज टेल मी, करेक्ट है? अब देखिए उसी तरह से दूसरा आपके पास है, इफ यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, single bond CH and double bond O. Now here we have A double bond B, single bond C, double bond D. In this case, you know that the pi electron shifts here, and this pi electron moves to oxygen atom. Now this is CHO, है ना? This is CHO, and यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मेन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है. It is pulling electron, it is withdrawing electron through resonance. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन withdrawal by the CHO via mesomeric effect, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं? वाया रेजोनेंस। तो इफ इट इज पुलिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन से, मेन पार्ट से क्या हो रही है? खत्म हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग, तो इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, और इट इज नोन एज माइनस आर इफेक्ट, एंड द ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। ओके, अब उसी में देखिए एक चीज और होती है आपके पास, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे आप करा सकते हैं, यू कैन मेक अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक दिस, CH2 पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पे नेगेटिव। ना इन दिस केस ना ही यहाँ पे प्लस एम हो रहा है, ना ही यहाँ पे रेजोनेंस इज हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट ना ही प्लस एम है ना ही माइनस एम, बट रेजोनेंस इज देयर। तो वी कैन से रेजोनेंस हो रहा है, बट ना ही ये प्लस आर है, नॉर इट इज माइनस आर। So you can say that all mesomeric effect, all mesomeric effect are due to resonance, but not all resonance, leads to mesomeric effect. हर रेजोनेंस की वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर मेसोमेरिक इफेक्ट जो होगा वो रेजोनेंस की ही वजह से होगा। बात समझ में आ रही है? आई होप इट मेक सेंस। यस नो? सही है? यस नो? हाँ, मेक सेंस। मरियम, व्हाट अबाउट यू? दिस लास्ट लाइन मेक सेंस? यस और नो? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Raise your hand once you're done writing.
everyone is done. Noha, you are writing. Can you scroll a bit up? Okay. Noha, you're still writing. Noha, let me know once you're done. Okay. Answer. I'm done. Yes. Now, right next. कि किसी फंक्शनल ग्रुप को देख के आप कैसे डिटरमाइन करेंगे whether it is going to give you minus m effect or plus m, है ना? So write determination of plus m and minus m. Determination of plus m or minus m and minus m person and minus m. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज की एटम. We touched upon this in the last class थोड़ा सा, right? So what is key atom? लिखिएगा इसमें the atom of functional group. किसका? functional group का atom, है ना? that is directly connected to the carbon chain ब्रैकेट में, और बेंजीन रिंग कर लीजिए क्योंकि बेंजीन रिंग में ज्यादा काम आने वाला है, लेकिन इन जनरल भी आप इससे यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दिस यू विल राइट अ क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द की एटम इन फॉलोइंग. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, की एटम जो होगा ना फंक्शनल ग्रुप का होगा. आप वो फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है ना, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, एंड देन फंक्शनल ग्रुप में कौन सा एटम है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन चेन. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, टेल मी गाइस. फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH. OH. OH में कौन सा एटम, O और H में कौन सा एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन चेन से? ऑक्सीजन. दिस इज योर की एटम. मेक सेंस? ये सोनो पीछे मी. Yes. Yes, sir. ये बोलिए. ठीक है, देन राइट.
आप रेड से उसको सर्कल कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, इफ यू कैन यू आइडेंटिफाई द एटम। बट प्लीज सबसे पहला स्टेप क्या है, व्हाट विल यू आइडेंटिफाई? सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप में फिर आपको आइडेंटिफाई करना व्हाट इज की एटम, ठीक है ना? हड़बड़ाना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए, फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगा, की एटम। देखिए आप हड़बड़ा गए हैं ना मरियम? मरियम, फंक्शनल ग्रुप में कौन सा अटैच है? खैर, Which one, sir? बी में देखिए ना, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, टेल मी। OH. OH नहीं है, COOH है ना, Yeah. कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, ये वाला कार्बन, इट इज अटैच टू द कार्बन चेन ना। हम्म, you get, है ना? सिमिलरली here we have aldehyde, तो aldehyde का कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू द मेन चेन। Oh, okay. ओके,
Tell your answers, guys. Send your answers, guys. So can I show Up. this? Sure. Just give me a second. Just a second. Yeah, correct. Noha, आपका हुआ? नहीं वो आपको समझ में आया? दिस इज द की एटम ना नोहा, यहाँ पे ये दिस इज द की एटम, या द नाइट्रोजन इज की एटम, एंड लास्ट वाले में दिस कार्बन इज की एटम. नहीं समझ में आया? शुड आई एक्सप्लेन इट? चलिए ठीक है. नोहा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. कैन यू आइडेंटिफाई दिस फंक्शनल ग्रुप? नो. एल्डिहाइड ना, CHO. ये ग्रुप जो है कैसे किससे कनेक्टेड है? मीन चेन से. दिस कार्बन एटम, राइट? है ना? ऑक्सीजन नहीं होगा ना, कार्बन होगा. मेक सेंस? ग्रुप क्या है? CHO. सो दिस ग्रुप मेन चेन से कैसे कनेक्टेड है? इट इज वाया दिस कार्बन एटम ना. गॉट इट? Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली फॉर दिस B1 ऑल्सो, बी में क्या है? COOH है, राइट? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू द मेन चेन ना, नॉट द ऑक्सीजन एटम. मेक सेंस? ठीक है. सिमिलरली दिस इज कीटोन. कीटोन में कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू द मेन चेन. राइट, नेक्स्ट. If the key atom of functional group is connected to more electronegative atom, via multiple bond, then it is minus M group. Then it is minus M group, है ना? जैसा कि if you have carbon double bond O, और यहाँ पे NH2 आ जाए, you have CHO, या फिर you have COOH, या फिर when you have nitrogen doubly bonded with oxygen and then singly bonded with oxygen, NO2, है ना? So all of these, और भी examples आएंगे, but mainly these, है ना? You write next. If not minus M, पहले आप minus M चेक कीजिएगा. अगर minus M नहीं है, then it will be
प्लस m, तब ये प्लस m होगा इफ द की एटम has lone pair electron or if it is any alkyl group. अगर alkyl group है तभी, और अगर alkyl group नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना. फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, यू हैव बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग का मतलब मेन चेन है ना, मेन चेन है आपके पास कार्बन चेन, इस पे आपने OH रखा हुआ है. दिस ऑक्सीजन एटम इज व्हाट, हैविंग लोन पेयर. की एटम ऑक्सीजन है, उस पे लोन पेयर है. सिमिलरली NH2. What is minus R? माइनस आर नहीं है, इट इज अल्काइल. अल्काइल अल्काइल को ऐसे डिनोट करते हैं ना, आर ग्रुप. गॉट इट. प्लीज राइट दिस डाउन. चलिए, सबसे पहले आपके पास है, कुछ तो पहले आसान देंगे आपको है ना. तो मान लीजिए आपके पास है जैसे OH, राइट. देन यू हैव सपोज CHO. अच्छा, इसको भी वाइट में कर देते ना, CHO है आपके पास. यू हैव NH2, carboxylic acid, COOH, COOR, and what else, COCl, CONH2. उसके बाद है आपके पास N, नाइट्रोजन आटम है. It is connected with hydrogen atom, then it is further connected with double bond O and CH3. इसी तरह से you have oxygen atom here, which is further connected to C double bond O. तो यहाँ पे आपके पास CH3, oxygen which is connected to CH3 atom. Then you have C triple bond N, nitrile CN group. और क्या और क्या और क्या और क्या. Then you can have NO2. चलिए, इसमें एक और आ जाएगा आपके पास. Suppose you are having fluorine या bromine. ठीक है. करके बताना पड़ेगा क्या एक, लेट मी नो. Yes, sir. क्यों, कौन सा. Um, anyone. एनीवन. अरे अभी तो बताओ, यहाँ पे बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है पहले वाले में. Alcohol. OH. क्या बोलेंगे, Earth. OH. What is the key atom in OH? O. O. तो बताइए, is O connected to any electronegative atom?
नो। नहीं ना? अच्छा, तो -m तो नहीं है, ठीक है। So अब plus. हाँ बोलिए, ये करनी मरियम। So it will be plus m. क्या? So it will be plus m. नहीं, लाइन बढ़िया ना, इट विल बी +m इफ इट हैज अ लोन पेयर। तो क्या ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है? Yes. हाँ, तब +m। ठीक है मरियम। Okay. व्हाट अबाउट CHO? अगला क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? Aldehyde. अरे CHO बोलिएगा ना भाई। अभी हमको CH. एल्डिहाइड से मतलब क्यों है? हमको क्या मतलब? हमको मतलब है व्हाट आर द एटम्स दैट आर मेकिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, है ना? तो वो क्या है? इट इज CHO। व्हाट इज द की एटम इन CHO? H. H नहीं भाई, कार्बन ना। H क्यों यार? ये बेंजीन, अरे ओके मत बोलो भाई, समझो इस बात को आप। H क्यों कहा आपने? व्हाई डिड यू से H? Because carbon क्योंकि is. कार्बन से कनेक्टेड है। Yeah. नहीं ना भाई, फंक्शनल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप तो हो गया, और एक कार्बन चेन होगा। कार्बन चेन कौन सा होगा? बेंजीन रिंग। Yeah. तो बेंजीन रिंग और CHO को कौन कनेक्ट कर, मतलब CHO और बेंजीन रिंग में मतलब किस चीज का बॉन्ड है? मतलब कैसे बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन से बेंजीन रिंग का बॉन्ड है, या कार्बन से, या ऑक्सीजन से, किससे है? Carbon. गॉट इट। की एटम कौन सा होगा? Yeah. Carbon. कार्बन। आप इसमें बताइए कौन सा होगा दिस स्ट्रक्चर, या COCl वाले में बताइए कौन सा की एटम होगा? Carbon. हाँ ठीक है, very good।
I'm done. Fine, Harsha. You can show it to me. अरे यार उतना क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें हर्षा? हर्षा, you are bolding it. Send your write a number. अच्छा अच्छा, आपके पास फोन नहीं है या मेरा नंबर नहीं है? I have a phone. I don't have a number. तो पहले बोलते ना आप. Okay. Guys, send me whatever you have done. Mariam, हाँ. देखिए, आपको ना ऐसे ग्रुप देख के समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, कि सीधा सीधा आंसर आ जाए ऐसे पढ़ने से ही. आपको बार बार यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. इफ द की एटम फंक्शन कनेक्ट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बार बार यू हैव टू सी वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, वाया मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है, सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड है. ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? आई थिंक दिस इज यू हर्षा, राइट? Yeah, sir. Yeah, fine. Yes. बी आर का नहीं पता? डिटरमाइन ना कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें. But it's not a functional group, right? अरे भाई, वो तो आईयूपैक नेमिंग के हिसाब से तो ऐसे तो NO2 भी नहीं होता है फंक्शनल ग्रुप, है ना? राइट हर्षा? Yeah, sir. वैसे है ना. ऑल्सो OCH3 भी नहीं होता फंक्शनल ग्रुप. ऑल ऑफ दीज आर सब्स्टिट्यूट, बट दैट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईयूपैक नेमिंग. ओके, आईयूपैक नेमिंग में दीज आर नॉट, मतलब हम उनको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखते, हम नहीं रखते. ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर भी रखता है. हम इस वजह से नहीं रखते फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में, बिकॉज देर आर फ्यू ग्रुप ऑफ एटम्स, देर आर फ्यू ग्रुप ऑफ एटम्स जिनका सफिक्स नहीं है. जैसे ओइक एसिड है, ये वगैरह है ना, उनका सफिक्स नहीं. जैसे ब्रोमीन, Br का हैलोजन का सफिक्स कुछ नहीं होता है, राइट? तो उसको हमने सोचा कि इसको हटा ही दो ना, फिर इसको लिस्ट से हटा दो. दैट विल बी इजियर फॉर यू गाइस, बिकॉज ये स्टार्टिंग में कभी आएगा ही इन द आइडेंटिफिकेशन, वो आखिरी में इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? बट एनीथिंग अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छा माई हर्षा, Okay, sir. देखिए आईयूपैक नीमिंग के बारे में तो आपको इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. वो आप सालिम सर की आईयूपैक नीमिंग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं पढ़ रहे, है ना? तो आपने ना ही देखा भी होगा इस तरह का स्पफ लेके आईयूपैक नेमिंग, राइट? तो उसमें जो भी ऊपर नीचे करना था हमने किया हुआ है. वो मतलब दैट इज, वो मेरा क्या बोले, टेलर्ड टाइप ऑफ थिंग, ठीक है? तो उसमें जो भी हम लोगों ने वर्ड्स यूज किए हैं उसको उसी कंटेक्स्ट में रहने देते हैं, ठीक है? एंड इन जनरल फिर हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. फाइन हर्षा?
Okay, sir. ओके नोहा, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही, पांचवा सही, ठीक, सही, सही। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, एट्थ वन इज वंस अगेन रॉन्ग, नाइन्थ वन इज रॉन्ग। देखिए गलती हो जाती है, देखिए। और मरियम प्लीज भेजिए ना आप। मरियम। It will be plus, right? The last one. हाँ हाँ, सही है हर्षम। मरियम, सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन। Sir, incomplete. अरे भाई, सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन ना। पहले ना मरियम, आपको जो चीज ठीक करनी पड़ेगी, देखिए, क्या आपने ये स्ट्रक्चर सही लिखा है? देखिए जरा मरियम, क्या आपने ये स्ट्रक्चर वैसे लिखा है जैसे हमने लिखा है? क्या आपने ये स्ट्रक्चर वैसे लिखा है जैसे हमने लिखा है? क्या आपने ये स्ट्रक्चर वैसे ही लिखा है जैसे हमने लिखा है? सिमिलरली हियर आल्सो। मरियम टेल मी, यहाँ पे No, भी। ठीक है, पहले तो आप काटिए उनको, दोबारा लिखिए। ठीक है, आप उनको काटिए, मतलब वो बाद में लिख लीजिएगा आप, लेकिन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, उनको काटिए, आप दोबारा लिखिएगा। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, इसे प्लस एम माइनस एम कैसे करना है। ठीक है, बट आप उसको काट के हमको फोटो भेजिए, तो आई आई नीड दैट। उसको काटिए बिल्कुल, मेरा बिल्कुल ऐसे दिमाग खराब हो जाता है ऐसे पे लिखता है तो। ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा ना बाद में, कि यहाँ पे तो बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ, और आपने दिखाया वो ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ब्रेन क्या ही रजिस्टर करेगा आपको कि ऑक्सीजन के साथ या कार्बन के साथ है ना। तो yes, काट sir. के हमको फोटो भेजिए। Okay. काटा आपने? मरियम, Yes, sir. I'm writing. नहीं नहीं, डोंट राइट, डोंट राइट, डोंट राइट, लिखिए मत, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी लिखिएगा बाद में भी, है ना। डोंट हैव टू राइट Okay. एनीथिंग। ओके, ठीक है, चलिए। सबसे पहले आपको कैसे लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे बोलिए? OH. ओ एच है, ठीक है।
की एटम क्या है? O. की एटम, ठीक है, इट इज O. Is it connected to electronegative atom? No. कनेक्ट, नो, ठीक है. क्या इसमें लोन पेयर है Yes. की एटम पे? यस. तो क्या होगा, प्लस एम या माइनस एम? Plus. प्लस एम. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप हियर? CHO. CHO. की एटम क्या है यहाँ पे? C. कार्बन. Is it connected to any electronegative element via multiple bond? Yeah. है ना, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से, Yes. करेक्ट. ओके. Yes. तो अब बताइए, आप तो सीधा इसमें क्या लिख सकते हैं, प्लस एम या माइनस एम, बोलिए. Minus M. पक्का, है ना? Yeah. ठीक है. नाउ टेल मी हियर, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? NH2. NH2. व्हाट इज द की एटम? N. नाइट्रोजन. कनेक्ट, इज इट नाइट्रोजन कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मान लीजिए आप, है ना, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन. Yes. दिस इज, ठीक है. No. तो क्या, नहीं, ठीक है. नाउ इज इट हैविंग एनी लोन पेयर? Yeah. तो क्या होगा, प्लस एम या माइनस एम? Plus M. गॉट इट? बात समझ आ रही है? नोहा, आपको समझ में आया? यस नोहा, है ना? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, चलिए बोलिए. आई वोंट हैव टू आस्क द क्वेश्चन ना, टेल मी. COOH. COOH. C. C. Yeah, yes. Yes. So plus M or minus M? Minus M. Okay. What about here? COOR. COOR. C. C. Yes. Yes. Minus M. Minus M. ठीक है, देखिए. Did I give you any extra information? क्या हमने कुछ और सिखाया आपको? No. बट वही सेम चीज को आपको ये इतना आना चाहिए ना कि कैसे एक एक स्टेप हम करके रखें. राइट Yes. मरियम? Yes. अगला वाला बताएं. COCL. COCl. C. C. Yes. Yes. And then Minus minus M. M. ठीक है. What about the next one? CONH2. CONH2. C. C. Yes. Yes. Minus. माइनस एम. चलिए इस वाले में बताइए. HN. हाँ, NH ना, नाइट्रोजन इज करेक्ट ना, NH ना, Yeah. ठीक है. इट इज NH. की एटम? N. नाइट्रोजन. इज नाइट्रोजन कनेक्टेड टू एनी, नोहा आप बताइएगा, ठीक है नोहा. Sir, इज नाइट्रोजन कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाया मल्टीपल बॉन्ड? नोहा, नाइट्रोजन किस किस से कनेक्टेड है बताइए. hydrogen, हाइड्रोजन carbon, से, कार्बन एंड, oxygen, जोर से बोलिए आप, जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत. ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. एक तो ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, फिर ये एक बॉन्ड है जो यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड है, फिर ये बॉन्ड किसके साथ है, व्हाट इज हियर? carbon. मेक सेंस. हाँ. तो बताइए, इज इट कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? हाँ. नो. नाउ नाइट्रोजन इज हैविंग 3 bonds, so will it have any lone pair? Yes, sir. Yes, no. Yes. इसके पास लोन पेयर है, तो व्हाट विल, की एटम इज हैविंग लोन पेयर, तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस एम. मेक सेंस ये सुनो, ठीक है. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, मरियम? व्हाट इज द की एटम? आप तो छोड़ो, आप की एटम बता सकते हैं ना आप सीधा सीधा, व्हाट इज द की एटम, टेल मी. O.
Oxygen. Is oxygen connected to any electronegative element via multiple bond? Yes. Yes. नहीं ना, ये देखिए एक तो Oxygen. सिंगल बॉन्ड Oh, नहीं ना, ये no, no, कार्बन no, से no, 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 no. ठीक है, इट इज नॉट कनेक्टेड। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर होगा इसमें, एंड इट विल बी Yes. देन प्लस m। ठीक है, Okay. then what about the next? What is the key atom here? Oh, Oxygen. Is it connected to any electronegative element via multiple bond? no, no. No. And is it having any lone pair? It will have lone pair, right? Yes. So क्या हो Yes. जाएगा, प्लस m हो जाएगा। Okay, what about the Cn? CN, C, Cn and then C, C, उसके बाद and is it? yes, हाँ, yes तो माइनस m। Yeah. ठीक है, ये yes. तो माइनस m हम And लोगों ने देखा हुआ पहले से ही। इट इज NO2 N and it is connected with oxygen by multiple bond. What about Br? देखिए Br में what is the valence electron in Br? हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ग्रुप नंबर क्या होता है, कुछ याद है? अरे भाई 7 बना रहा है, कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड, डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 लोन पेयर्स होते हैं यहाँ पे। ओके, ऑल दी हाइड्रोजन एटम दे हैव 3 लोन पेयर्स। तो Br ही है, की एटम इज आल्सो Br and it is not connected to any element, electronegative element via multiple bond, and yes, it is having lone pair electron, तो क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई ऐसे ना, प्लीज इसी तरह से इसको कर लीजिएगा। गॉट इट, yes or no? yes, sir. ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन खुद से करिएगा आप लोग, है ना? ओके, Yes, sir. चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू मोर थिंग्स। आई थिंक लास्ट नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास। और ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन, सेपरेशन के जो प्रिंसिपल्स है ना, दैट आई विल टेक वो बाद में। ठीक है, अभी नहीं। वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ इन सम एक्स्ट्रा क्लासेस आई विल टेक सेपरेशन वाला, और सेपरेशन वाला जब हम क्लास लेंगे दैट विल बी इन पीपीटीज। ठीक है, उसमें आई वोंट बी बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, और द मेन रीजन इसके ना, सेपरेशन आप लोगों को कभी मतलब 12th स्टैंडर्ड में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं आने वाला। ओके, सो दैट इज वाई वो पीपीटी, और बहुत ज्यादा इन डेप्थ हम नहीं जाने वाले सेपरेशन के टेक्निक्स के ऊपर, लाइक क्या होता है नहीं होता है। अदरवाइज बहुत डेप्थ में जाया जा सकता है सेपरेशन के मामले में, है ना? एंड व्हेन यू आर गेटिंग टॉट बाय एमएससी, क्योंकि मास्टर्स के कोर्सेज वगैरह में ना वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेपरेशंस, खुद ही हम लोगों को करना पड़ता है, एंड इट इज